afternoon and welcome back to Moneycontrol live stream. You're watching the closing bell. I'm Santosh Nair. And I'm Yatin Mota. It was the third successive day of losses in the market today. Benchmark indices Sensex and Nifty closing in the red. However, they still managed to close off the day's lows. Mid-cap and small-cap stocks were also under pressure today. However, they did fare better than their frontline counterparts. And among the prominent losers mainly were from the IT and PSU banking sectors. In fact, both sectors had done pretty well yesterday. Today, among the stocks which did well, they were mainly from the metals and to some extent the auto sector. The India volatility index was up marginally by about 0.5% to 12.14. Among the prominent gainers of the day in the Nifty, we had BPCL, Divi's Lab, Bajaj Auto, Axis Bank and M&M, whereas among the prominent losers we had HCL Tech, Infosys, IndusInd Bank, SBI Life and Wipro. एब्सोल्युटली। और सैंटो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बेयर्स का दबदबा है। मार्जिनली 20 से 50 पॉइंट की गिरावट में हम लोग सेटल हो जाते हैं। और एक ट्रेंड जो क्लियर है वो ये है कि आईटी स्टॉक्स में बिकवाली है और सामने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में थोड़ी बहुत तेज़ी है, बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको 1:1 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो जनरली अगर हम बात करें तो मिड कैप्स सेक्टर एग्नोस्टिक बन के मूवमेंट दे रहे हैं। ऑब्वियसली आज अगर हम देखें तो मेटल, फार्मा और ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी थी और बाकी सभी के सभी सेक्टर्स आपको लाल निशान में जाके बंद हुए। ऑब्वियसली जो वीकली एक्सपायरीज होती हैं निफ्टी बैंक की, फाइनेंशियल निफ्टी की, उसके कारण भी थ्रू द वीक हमने अभी तक वॉलेटिलिटी देखी है। लेकिन ये देखना होगा थर्सडे को जो वीकली निफ्टी की एक्सपायरी होती है वहाँ कैसे मार्केट शेप अप होता है, क्योंकि जो 1-2 दिन से फॉल हो रहा है वो पिछले वीक का पूरा गेन वाइप आउट करने में सक्षम रहा है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो सैंटो थोड़ा बहुत ओवरबॉट अब मार्केट का सिनेरियो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। Well, yes, I agree with you, Yatin, but at the same time, as you also mentioned that because of the strength in mid cap and small cap to some extent, the sentiment is not as bad as it was. Yes. However, liquidity though seems to be a bit of a problem in second line shares. The kind of volumes that you used to see till some months back, those kind of volumes are clearly not being seen. And with that, let's move on to the stocks on our watch list this afternoon, beginning with Titan. Kotak Institutional Equities has rated the stock as an add with a price target of 2,700. Yatin, this is a stock we have been we discussed a couple of weeks or last week also after the fourth quarter business update. Now, the business update was very strong, and typically this is also a strong season for Titan. But at the same time, the strong business update really has not translated into gains for the stock, which has been pretty much sideways over the last couple of weeks. Now, according to the Kotak report, the company has cut the commissions for its L2 and L3 franchisees of Tanishq. According to Kotak, this is something rare, and that the company is doing this indicates that it's trying to defend its margins at all costs. The big worry for Titan at this point is that gold prices continue to rise, and typically when gold prices move up, the demand for jewelry and gold typically tends to come off a little bit, and Kotak is of the view that this could weigh on the near term growth prospects for Titan. Absolutely, and Santo, valuation wise also Titan has remained rich. Obviously performance company की बहुत ज़बरदस्त रही है, but Santo, आपको लगता है कि company is also now something like a ITC looking to diversify from its core business? From gold it is trying to move away to diamond jewelry, to eyewear, to sunglasses, to watches. You forgot saris. Yeah, saris obviously they have, but that hasn't been a very big money maker from them. बट क्वार्टरली अपडेट में अगर आपने देखा होगा तो इनका आईवेयर बिजनेस जो है, जो इनका कंज्यूमर बिजनेस है वो अच्छा कर रहा है। ऑब्वियसली ये टाइम ही बताएगा कि कंपनी कितना डाइवर्सिफाई कर सकती है, बट हाँ, देयर आर न्यू बिजनेस लाइंस विच प्रोवाइड गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्ली द रीजन व्हाई द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट दिस वैल्यूएशन। वेल, मूविंग ऑन फ्रॉम टाइटन टू कोल इंडिया, ये एक स्टॉक है जहाँ काफ़ी सरप्राइजेज आपको पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। पिछले साल की बात करें तो ईएसजी थीम के कारण एंटी ईएसजी स्टॉक्स जो कि ऑब्वियसली कार्बन वाले हैं, कोल वाले हैं, उन पे व्यू नेगेटिव था।
मार्च आते आते लोगों को लगा कि यहाँ ऑफर फॉर सेल सरकार करेगी, वो भी नहीं हुआ। तो अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ कंपनी में आए, लेकिन कोई बड़ा ट्रिगर यहाँ नेगेटिव साइड पे आया नहीं। और शायद अभी जेपी मॉर्गन का भी व्यू स्टॉक पे चेंज हो रहा है। इन्होंने एक ओवर वेटिंग रखी, वेट रेटिंग रखी है स्टॉक पे, और कोल इंडिया पे उनका टारगेट अब बढ़ के हो गया 290 रुपीज़। पिछले 2-3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो एफआईआईज ने यहाँ स्टेक बढ़ाया है। तो जो ईएसजी कंसर्न्स है, यानी जो एनवायरमेंटल सेफ्टी और ये जो ग्लोबल एमिशन स्टैंडर्ड्स के कारण जो एक्टिविज्म आया है, वहाँ चिंताएं थी। लेकिन अगर आप देखें तो एफआईआईज का कोई कंसर्न नहीं है। शेयर होल्डिंग धीरे धीरे करके पिछले 2 सालों में एफआईआईज की बढ़ी है। प्लस अब जेपी मॉर्गन को लगता है कि जो वेज हाइक्स यानी जो सैलरीज कंपनी ने बढ़ाई हैं, उसके चलते अब इनको अपने कोल अग्रीमेंट्स के दाम भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो एनी टाइम द कंपनी वुड बी इन अ पोजीशन टू इंक्रीज देयर कोल प्राइसेस एंड पास ऑन द वेज हाइक कॉस्ट टू द कंज्यूमर्स। तो ये देखा जाएगा कोल इंडिया कैसे अपने एफएसएज रिवाइज करती है। बट हाँ, ब्रोकरेजेस यहाँ सैंटो बुलिश होते हुए clearly, but Yatin, also the stock had a good run up between May 2021 to about September or October of 2022, when the stock price almost doubled. Yes. And if you look at the global coal prices, clearly a stock like Coal India should have done much better, considering that coal prices have been a major pain point for most of the commodity companies, be it cement, steel, and yet you have not seen the kind of strong earnings that ideally you would expect if coal prices were so high. Of late, there was some interest in Coal India. That was also because of the fact that dividend yield had become attractive, yes. and overall the outlook for coal demand still remains strong. But that said, the stock has been a disappointment in some way, I would say, for someone who's holding it for the last. Yeah, but typically, Santo, this coal PSU has been pricing their coal at a much steeper discount to Exactly the global benchmark prices. In fact, if you look at the calorific value to the pricing, Coal India's coal sale would be probably 50-60% lower than the international prices. Obviously, e-auctions is one space wherein the street was bullish, and the phase where you're talking about the stock price doubled, there when there was a conflict between Australia and China, and the coal prices had seen a sudden jump. So yes, there was some benefit in e-auctions for Coal India. एंड एज सैंटो was rightly mentioning कि क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम आ गया है, डिविडेंड यील्ड भी जो आर्ग्यूमेंट थी वो भी अब प्ले आउट हो चुकी है, तो यहाँ से कैसे स्टॉक मूव करेगा, लेकिन ये तो टाइम ही बताएगा। अगर ये प्राइस हाइक कर देते हैं सैंटो, तो शायद कंपनी के स्टॉक में फिर से एक बार ट्रेडिंग मोमेंटम आपको दिखेगा। So everything depends on that now. Well, last stock on my watch list is Just Dial. Stock has seen a good run up over the last 1 month. It's gained by close to about 13%. Citi has come out with a bullish call on Just Dial. Citi has rated the stock a buy. At the same time, it has raised its target price to about 815 rupees. Citi's argument is that, judging by the company's fourth quarter business update, its core business has been able to sustain its momentum. Also, top line metrics have now almost on par with pre-pandemic levels, but at the same time, the operating margins, they are still way below what it used to be pre-pandemic. So clearly there is some room for expansion out there, and also valuations at current level are fairly attractive, and that's what makes Citi bullish on Just Dial. Absolutely, and the results were also quite good as far as Just Dial is concerned. But the stock of the day clearly was Piramal Pharma. हमने ये देखा है कि जो लिस्टिंग थी डीमर्जर के बाद 200 रुपये पे स्टॉक लिस्ट हुआ और धीरे धीरे करके स्टॉक गिरते चला गया। ये एक कंपनी है पिरामल फार्मा, जहां आज स्टॉक में हमने लगभग 7 से 8% की अपटिक देखी, क्योंकि न्यूज़ ये थी कि इनका जो एक यूएस में प्लांट है सेलर्सविल में, इनको EIR मिल गया है यूएस FDA की तरफ से। नाउ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये प्लांट, एक बात, और दूसरा जो EIR यानी एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशंस और जो एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट मिली, उससे यूएस FDA ने प्लांट को क्लियर कर दिया, ऐसा माना जाता है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो काफ़ी सारे इंस्पेक्शंस इन्होंने पास्ट में भी सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। ये एक ट्रिगर तो है ही, और कंपनी ने रिसेंटली ये भी अनाउंसमेंट किया था कि वो फंड रेज करने वाले हैं राइट्स इशू के ज़रिए, तो ये भी एक की ट्रिगर पॉइंट रहेगा कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में। ऑब्वियसली राइट्स में जो एक्सपेंशन के लिए पैसे जाएंगे, और कंपनी ने जो बात की है कि आगे जाके थोड़ी बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होगी,
तो अर्निंग्स के लिहाज से काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, बट हाँ कंपनी ने एक बॉटम फॉर्मेशन किया है और कहीं ना कहीं आज का जो मूव है वो ये लगभग तय कर देता है कि स्टॉक मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में बॉटम हो चुका है और यहाँ से अब स्टॉक को काफ़ी अच्छे सपोर्ट के साथ अपसाइड होनी जो है वो आ सकती है। तो ये एक स्टॉक रखेंगे रेडार पे 7750, यानी लगभग 8% ऊपर बंद होता हुआ आज स्टॉक पिरामल फार्मा का। Over the last few days, again, Yatin, market sentiment towards pharma stocks appear to have improved. Yes. What are the key reasons, according to you? Actually, brokerages do believe that in the short term, US की जो generic market है वहाँ demand भी अच्छी आई है और pricing भी improve हुआ है. Obviously, there is a camp which says that ये जो price hike है और जो price improve हुआ generics का ये short lived हो सकता है क्योंकि competition काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. लेकिन हाँ, Indian companies की अगर हम बात करें तो raw material cost कम हुए हैं अगर आप साल दर साल बेसिस पे देखें, और अगर हम डिमांड की बात करें या यूएस जेनेरिक मार्केट की बात करें तो वहाँ भी बिजनेस ठीक ठाक हो रहा है। ऑब्वियसली अप्रूवल्स काफ़ी सारे इंडियन कंपनीज ने जीते हैं, उसके कारण भी बिजनेस विजिबिलिटी इंप्रूव हुई है, बट ये देखा जाएगा ये कितना सस्टेनेबल है क्योंकि देर आर टू कैंप्स स्टिल इन द फार्मा सेक्टर। वन थिंग्स दैट वर्स इज ओवर एंड वन थिंग दैट दिस 4 दिन की चांदनी इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म एंड देन अगेन there could be some tailwinds on the cost side, which means the cost is likely to improve on increase, which could again hurt margins. Well, and with that we wrap up this episode of Closing Bell. Thank you for watching. जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. We'll be back with you again at 9 AM tomorrow morning.